A blessed and beautiful Wednesday to each one of you. I hope you all are in the pink of your health. Let's make it more powerful and motivational with today's session. I, Mahima Sindhi, on behalf of the entire MMDU family, extend a hearty welcome to each one of you to our series of live sessions where we bring expert professionals and celebrated artists on board to share their pearls of wisdom and their juices of life experiences to learn from. In the words of Thomas Keller, a recipe has no soul. You, as a cook, must bring the soul to the recipe because food is not just eating energy, it is experience. On the same note, let us hear an interesting tale on the food walk and virtually taste the fruits of life voyage of none other than a famous YouTuber, food explorer, and a storyteller, podcast host, and the founder at Delhi Food Walks, Mr. Anubhav Sapra. We will have Sir on the screen after a short break. पापा हम्म? ये थोड़ा मेरी तरफ से। ओ बेटा बाप को पैसे दे रहा है। अरे नहीं पापा, इट्स जस्ट अ थैंक्स। किस बात का? वो आपने कहा था ना, कहाँ पढ़ना है वो फैसला बड़ा होता है। जिंदगी के 4 साल का सवाल नहीं, सवाल पूरी जिंदगी का है। Maharishi Markandeeshwar deems to be University, Maulana Ambala, preparing you for the real world. May I request the backend team to have Sir added on the screen, please? Hello, sir. Warm greetings. How are you? Hello. I'm good. How are you? I am doing absolutely well, sir. So let me take this opportunity to formally introduce Sir, Mr. Anubhav Sapra, an ardent foodie and a culinary commentator who is on a quest to connect people with food that adorns the streets and lanes of a city, flavors that define its soul, food that satiates the masses, food that delights the enthusiast, and food that provides a window to the culture. After completing his master's in political science from Delhi University, followed by a postgraduate diploma in sustainable rural development from NIRD, Mr. Sapra joined a reputed NGO as a human resource associate and volunteered as a program coordinator. During these periods of his academic and professional pursuits, he ambled down the streets of Delhi in search of tasty yet affordable food. All those explorations led to the discoveries of street food gems, legendary and not so famous. Eventually, Sir Anubhav got attracted to the enthralling world of street food and delved deeper into the gustatory and socio-culture aspects. After a thorough recce of the eating scene across the streets of Delhi, he decided to turn his passion into his profession, and thus was born Delhi's pioneer food tour company called Delhi Food Walks. From the past 11 years, Sir has been acquainting discerning visitors and travelers with the popular flavors and the stories behind them. Today, Mr. Sapra is not just a favorite among the street food fraternity in Delhi, but also among the travelers who come to discover the city. He, with his handpicked team of food explorers, has changed the general perception about Delhi's food scenario, especially among Western travelers. A walk with DFW is much more than a gustatory tour. It is a rendezvous with Delhi's complex culinary heritage. In addition to the curated food walks, he and his content team operate a media ecosystem blog, social media platforms, YouTube channel that have evolved into one of the most reliable and independent sources of information regarding any city's street foodscape, with approximately 1.18 million subscribers on his YT channel. Let us discover some insights of his inspiring journey. Sir, we have some couple of questions, and via that, we'll get to know you more. Sir, can I be heard? I think Sir is facing some network issue. May I request the backend team to please check if we have Sir on the screen? We'll have Sir added back while he fixes his network glitch. Meanwhile, in the comment section, can I get to know from you guys what is your favorite food? Or what is the most loved street food that you've ever tasted? It can be any place. Punjab, Delhi, Haryana, Shimla, whatsoever. Which is the most loved street food that you've had, and the street the the taste is amazing, it's sumptuous, and this is something that you've never forgotten. The palate still has the taste when you recall of that.
May we have an advertisement while we get Sir's network fixed? पापा, हम्म? ये थोड़ा मेरी तरफ से। ओ बेटा बाप को पैसे दे रहा है। अरे नहीं पापा, इट्स जस्ट अ थैंक्स। किस बात का? वो आपने कहा था ना, कहाँ पढ़ना है वो फैसला बड़ा होता है। जिंदगी के 4 साल का सवाल नहीं, सवाल पूरी जिंदगी का है। महर्षि I must thank the college for providing us with the latest edition of all the books in their world-class library. To sum up my experiences in this college, I haven't regretted a single day in this college, which strengthens my belief. Flexible schedules made it easier for us students to enjoy academics along with the extracurricular activities. Final year will be filled up with lots of experiences and support from the college mates and college faculty. I'm truly very happy to be a part of MMIPR, MM Institute of Physiotherapy and Rehabilitation. Maharishi Markandeshwar deems to be university. Maulana Ambala, preparing you for the real world. Yeah. A smile is a makeup that never fades away. And let me guess who makes them? A dental surgeon. I'm sorry, there was some network issue from, I think, my. A smile is a makeup that never fades away. And let me guess who makes them? A dental surgeon. Hi, I'm Deepthi and I'm pursuing my BDS from this renowned university. MMU is a guide map to many national and international students which leads them to their destination named as success. It's a place where you basically expertise in your area of interest mainly by focusing on theories, but MMU focuses on both practicals as well as theories. The core aspiration of College of Dental Sciences and Research is not only to produce a good dentist but also a good citizen by adopting a moral and ethical values in their daily life as well as in profession. Comes in the top 25 dental colleges all over India, and I'm very proud to be a part of this stupendous college. I'm glad I chose MMU as my university as it provides plenty of opportunities in all walks of life. Maharishi Markandeshwar deems to be university. Maulana Ambala, preparing you for the real world. Yes, sir. Yes, I think it's better now. We can start. Yes, sir. So we'll begin with a couple of questions that I've been receiving, and via that we'll get to know more about your food journey, and we'll have a walk, right, a virtual walk. So the first question that I have for you, sir, is so they say the food blogger's life seems very amusing, vibrant, and fun enough to make many reconsider and regret their career choices. Though there are struggles and truckloads of hard work for sure. So, what's your take on this? How did you begin with your journey from being into a typical HR and then coming into food blogging? So, how has it been for you? Can we get a ride into your Oh, journey? it's a long journey. How I started. So initially, like the days when I started, I was not a YouTuber. I was not doing making food videos. I started with a food tourism company, and the name is still Delhi Food Walks. In 2010, I started a blog called Street Food of Delhi, and that time I had a day job. I was working in non-profit organization, and in during those days, I had an idea like just to explore the lesser known places in Delhi, document them, and write them on my blog. And I wrote many blogs. I think till 2014 I was quite regular with writing blogs, and till 2017 I wrote. In fact, I was writing very regularly. Like I used to write one blog a week about a new place. And since then, like I started doing food walks over weekends because
during the whole week I used to work in non-profit organization, and on Correct. Saturdays and Sundays I used to organize food walks in different locations in Delhi. And I realized people living in Delhi, they don't know about the places, what to eat, where to eat in Delhi. I'm talking about 2010, 11, 12. Those Right. days, YouTube was not that popular, Instagram was not that popular, Facebook groups had started. There was no, I think, Facebook pages were not there. People were Right. just writing blogs, and there were serious bloggers who used to write blogs, and there were Correct. serious food columnists in terms of street food, which like weekly columns we used to read. And that suddenly changed in like say 2016. Now everything is more focused on visuals, like we are more Correct. Yeah. into visuals. So in 2014 I quit my job and I started doing food walks on a regular basis. And initially it was just me doing the walks. Over the period of time I had a group of 7 people, and we used to do multiple walks in different parts of Delhi. And in 2018 I started my YouTube channel, and the idea was again the same thing, that I have explored each nook and corner of Delhi, then why not expand to other cities. And in last 4 years I have been to 25 states in India, and we post 2 videos every week on our YouTube channel. And in 4 years we have grown from like zero to million plus subscribers. That's all organic. So yeah, that's a short journey. I think that is wonderful. That is amazing. Just one cross question from what you said. So, what was your motivation? Were you always a foodie since childhood, or were you somebody who always was into health and being a fitness freak? Or how did you get into this industry? I mean, what inspired you? What was that one light bulb kick moment that when you thought that abhi khana hi karna hai, food is the only thing that you want to explore? Acha, so I was a foodie since my I'm a foodie like since my childhood. Okay. And मतलब बचपन से ही खाने का शौक तो था ही, और उस Hmm. शौक को करियर में कन्वर्ट कर दिया। और जब शुरुआत की थी दिल्ली फूड वॉक्स की, तो मतलब कहीं ना कहीं अब पता नहीं, जैसे मुझे पता नहीं आप लोग कितना फूड कॉलम पढ़ते हैं, फूड राइटर्स को फॉलो करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट से लेट 90s 2000s. Around that time they used to be as I said, like serious food writers, food columnists. अभी ऐसे मैं अपना एक गुरु मानता हूँ मिस्टर Hmm. राहुल वर्मा को. He writes column in the Hindu newspaper, and I have been following him religiously for last almost 20 years. In fact, more than Amazing. 20 years, but I can say like for 20 years I have been reading his columns. Then I'm sure everyone would have watched Zaika India का show by Vinod Dua sir. उनका शो देखा है हम लोगों ने. देन थर्ड इन्फ्लुएंस आई ऑलवेज टॉक अबाउट एंथनी बोर्डेन, Hmm. जो कि ही पास्ट अवे इन 2018. उनके हम लोग शोज में अभी तक देखता हूँ, मतलब उनके CNN पे शोज आते थे. Hmm. अभी भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है. पार्ट्स अननोन, नो रिजर्वेशंस, ले ओवर, बहुत सारी सीरीज हैं. So these are the people who kind of inspired me to make a career out of it. And I was the first one to start food walks in professional way in Delhi. And Right. like food tourism में, कि street food tourism भी है, और इंडिया में Hmm. लोग आए and they come just to explore the food. Like people come here Right. to visit say Taj Mahal, और वो अलग अलग monuments जाते हैं. Why not they come just to eat our food? And Correct. you will surprise, like कल कल का न्यूज़ है. I don't know if you have read about that news, कि यूएस में द बेस्ट रेस्टोरेंट जो अवार्ड मिला है वो इंडियन रेस्टोरेंट है, चाय पानी नाम से. Oh, सो that's वी lovely. कैन जस्ट थिंक अबाउट लाइक कि हमारा इंडियन फूड कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है. और Correct. तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट था कि लाइक आई वाज अ फूडी, एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ document the street food culture of India, and through like different platforms, whether it's food walks, whether it's food festivals, or it's creating content online. तो मैंने अपने बस वो इंटरेस्ट था उसको एक चैनलाइज करके इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ले आया. I think that is amazing, sir. And sir, एक odd question, because you were talking about your journey and that you were a foodie since childhood. So how did your family take it when you told them कि मैं ये इसको एक business बनाना चाहता हूँ? Exploring food and moving around Delhi and eating, and that's how you're going to earn. It's like bringing bread to the table. So how did your family take it at first? And I would really want to know the elderly in your family. How did they take your parents? Were they always supportive? या उनका क्या reaction था? Because you're उनको talking तो about back in that days. So या आई टेल यू, उस समय तो क्या मतलब कई सालों तक उनको समझ में नहीं आता है करता क्या है.
like what is he doing? Because I was ऐसा like मैं फूड टूरिज्म में था, तो हमारे जो मोस्टली गेस्ट आते थे वॉक पे, वो मोस्टली इंटरनेशनल टूर्स ट्रैवलर्स थे। अब उनको हम लोग चांदनी चौक में ले जा रहे हैं, तो लगता है कि वो खुद जाके क्यों नहीं खा सकते, वो तुम्हें क्यों अप्रोच करेंगे? एक पहला क्वेश्चन ये था। और वो अभी तक भी है कि ये करता क्या है, मतलब उनको बताना भी होता था किसी को कि क्या करता है, ये तो कहते हैं फूड का वॉक करता है, लोगों को जगह जगह ले जाके खिलाता है, तो वो खुद क्यों नहीं कर सकते? तो ये क्वेश्चन उनके मन में बहुत सालों तक रहा। फिर धीरे-धीरे उनको समझाया कि नहीं, ये जैसे आप मॉन्यूमेंट्स जाते हो घूमने के लिए, तो आपके पास एक टूर गाइड होता है, जो आपको स्टोरीज़ सुनाता है। तो वैसे ही हम लोग फूड स्टोरी टेलिंग करते हैं। लाइक इफ यू विजिट अ प्लेस, वी टॉक अबाउट द प्लेस कि हाँ, ये शॉप इतने सालों से है, यहाँ पे ये चीज़ें मिलती है, ये ओनर की कहानी है, ये डिश ऐसे बनाई जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यहाँ पे ये मिलता है, आप खा लो। It's all about storytelling, like sharing stories of people through food. So that was a major challenge from in those days. Now they've started understanding कि क्या करता है। अभी भी उनको रहता है कि ये वीडियोस के लिए, खाने के लिए, क्या तबीयत खराब करने के लिए बाहर जगह-जगह जाता है। लाइक घर का खाना क्यों नहीं खाता? बट अब now that's my profession. Exactly, yeah. And I think with time, I'm sure like all of us have faced that. If you choose a career which is probably different from what is something very routine and normal, it is a challenge, A, to explain it to your family members, B, for your family members to explain it to your relatives, and then those relatives to spread it in the town wherever you stay ki karte kya hai. I think we all, I mean, I have been into the same ship. We've all faced those challenges, but I think the journeys are always beautiful. If you explore something different, then why not? I mean, what is to stop you to explore something that is new and challenging? And then that is now Yeah. trend setting. People are now following your Mhm. shoes, and now they come up, come to you and take advices ki sir batao aur kaise grow kar sakte hain apna channel, and how do we explore more, gain money. So I think that's that Mhm. setting standards. Beautiful journey, sir. So moving on to the next question, Manju Ka Tila, the famous place for good and cheap food in Delhi, and I still remember the taste of the dishes there I had there. So can you also share some good places to explore while being in Delhi? To name a few, maybe two, three places, something Oh, that there are one many. cannot miss. Yeah. There are many. Like it's so difficult to kind of answer this question by saying कि ये तीन जगह खाने की है। दिल्ली इतना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल्ली एक तरह से फूड कैपिटल है इंडिया का। And there are so many places to eat and explore in Delhi that it's difficult, like even for a lifetime, to explore all the places. Like there's so many places. Every day you have a new place. तो जैसे आपने मेंशन किया मजनू का टीला, तो मजनू का टीला जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरे घर से सिर्फ इट्स जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे, एंड आई स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। तो वहाँ से इट्स अ बिग काइंड ऑफ हैंग आउट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। हम लोग एमकेटी बोलते थे, अभी भी स्टूडेंट्स एमकेटी बोलते हैं मजनू का टीला। तो इट्स अ टिबेटन कॉलोनी, यू कैन से। तो वहाँ पे जो खाना मिलता है आपको, प्रॉपर क्लासिक ट्रेडिशनल टिबेटन फूड मिलता है। वहाँ की सबसे, अगर सिर्फ मैं एमकेटी की बात करूँ, तो सबसे जो मेन डिश है वहाँ की, वो है लाफिंग। लाफिंग आप धर्मशाला, मैक्लोडगंज जाएँगे, वहाँ भी मिलेगा आपको। मोस्टली जहाँ पे टिबेटन सेटलमेंट्स हैं वहाँ मिलेगा। इट्स लाइक अ कोल्ड नूडल, और बहुत स्पाइसी भी होता है, और उसका सूपी वर्ज़न भी आता है, ड्राई वर्ज़न भी आता है। वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। फिर एमकेटी में आपको मोमो के बहुत सारे वर्ज़न्स मिल जाएँगे। एक तो जो क्लासिक स्टीम मोमोज़ हैं, मतलब हम लोग कहते भी हैं कि Yeah. दिल्ली वालों को मोमो खिलाना एमकेटी ने सिखाया, क्योंकि इट्स अ टिबेटन डिश मोमो। Now we have Right. created different versions of momo ki, tandoori momo bhi hai, afghani bhi hai, but the classic versions you will still get in Majnu Ka Tila. And then there are many other kinds of, like say, butter tea you get in Majnu Ka Tila. Is like they add butter and salt, so it's a salty tea. तो बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे खाने की। आपका अमा कैफे है, बिग एप्पल है, और टीडी है, रिकोज है। बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स भी हैं, स्ट्रीट फूड भी काफ़ी पॉपुलर है। तो वैसे तो ये है, बट अगर एक सिर्फ दिल्ली के खाने की बात करें, तो मुझसे लगता है, मुझे वेजिटेरियन में हमारे दिल्ली वालों की पहचान है, एक छोले भटूरे। हाँ, वेरी ट्रू। पंजाब में भी है छोले, सर। जी, जी, तो छोले भटूरे हैं, उसके बाद छोले कुलचे हैं वेजिटेरियन में, उसके बाद एक डिश जो इन्वेंट हुई बटर चिकन, वो दिल्ली में हुई, मोती महल जो रेस्टोरेंट क्लेम करते हैं कि उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद आज तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो बटर चिकन है। ये सब चीज़ें हैं जो दिल्ली की एक तरह से आइडेंटिटी है, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, और इधर आपका, और मोमो भी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मोमो की भी जितनी वैराइटीज़ मैंने जहाँ-जहाँ ट्रैवल किया है, जितनी अच्छी वैराइटीज़ आप कहें दिल्ली में मिलती है, वो मतलब क्लासिक से हट के, वो हाँ जी। और कहीं नहीं देखा मैंने।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लगता है मुझे एक डिश जो अब आजकल जैसे छोले भटूरे का नाम लेते थे, वैसे ही अब मोमो का भी नाम हम लोग नहीं लेंगे कि मोमो भी हमारे खाने का हिस्सा बन चुका है। एंड मुझे लगता है सर आज के जो टीनेजर्स हैं उनको यू आस्क एनीथिंग, मतलब एक नॉर्मल टीनेजर होगा, एक एडल्ट होगा, आप कहीं पे भी जाएंगे, इफ इट इज टू टॉक अबाउट मोमोज, वो सबका प्लान बन ही जाता है और हर कोई रेडी हो ही जाता है कि चलो एक पीस तो ले ही लेंगे, इफ नथिंग जी, एक तो जी, ट्राई जी। कर ही लेंगे. So that's how जी। exactly. So moving on to the next question, sir, how to make a career startup in street food? What do you think of the youngsters who aspire to be one? So what are the suggestions? How can they come into the industry? Coming as like as a food blogger Yeah, or as a food blogger or somebody into food and enthusiast or a food critic, how can they get into this stream basically? I mean, being a see, foodie will do, or do they need a professional degree, or what steps do they need to follow? Acha, I'm not sure about if any university is offering a degree to be a food blogger or a food critic or a food reviewer or a food vlogger. So I think abhi bhi jo India mein is still like if you are passionate about food, you go for it, and then you make a career out of it. But the only thing is that I think which is with every profession is about learning. Right. और जो आज के मुझे लगता है कि जो जनरेशन है, वो कहीं न कहीं मिस कर देती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि आई व्हेन आई स्टार्टेड एंड टिल डेट आई स्टिल फॉलो डिफरेंट फूड राइटर्स, Yeah. आई रीड देयर कॉलम्स रिलिजियसली, आई वॉच फूड शोज़। जो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस जनरेशन ने लर्निंग छोड़ दिया है। Hmm. वो सिर्फ़ उनको मतलब मुझे लगता है ऐसा, मतलब ये मेरा मानना है पर्सनल कि फ़ोटोज़ लेना, बॉलीवुड म्यूज़िक ऐड कर देना और रील बना के डालना इंस्टाग्राम में इज़ अ डिफरेंट थिंग देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट फूड. So anyone who wants to be a food blogger, I would suggest first read, first learn, first वॉच शोज, वॉच डिफरेंट थिंग्स ऑनलाइन. सब कुछ है, बुक्स हैं इतनी सारी Hmm. हमारे इंडिया में, मतलब खजाना है. इतने सारी क्विजीन्स हैं, उनको समझने के लिए आप कुक बुक्स हैं, आप उसमें देखें, या फिर फूड हिस्टोरियंस हैं जिनकी किताबें हैं उनको पढ़ें. उसके बाद जाके फिर आपको लगे कि इंटरेस्ट है, देन you come into this profession, and then over the period of time you learn it, like when you it's like क्या कहते हैं OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लाइक On the job. ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो वही है कि आप करते जाते हैं, इसको सीखते जाते Hmm. हैं. आपने पहला कुछ ब्लॉग लिखा, देन यू विल हैव डिफरेंट कमेंट्स और फीडबैक फ्रॉम द रीडर्स. और अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो व्यूअर्स से आपके फीडबैक आएंगे, देन यू इम्प्रोवाइज ऑन योर नेक्स्ट एपिसोड और ऑन नेक्स्ट ब्लॉग Hmm. or your next anything, like if it's a podcast or whatever it is. So Hmm. I think that's the thing. And then इंडिया में हमारे पास है, ऐसा भी नहीं है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं होटल मैनेजमेंट के होते हैं, उनको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने फूड के बारे में, और वो पढ़ाई करते भी हैं, या फिर टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनको पता होता है कि अलग, क्योंकि फूड इज़ लाइक मतलब आप कहीं कुछ भी करें, आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो एक खाना बहुत बड़ा हिस्सा होता है, फूड एक्सप्लोर करना, वहाँ का लोकल. आप साइट सीइंग करते हैं तो साथ में लोकल खाना खाते हैं, तो मतलब हर एक मुझे लगता है कि ये 2 स्ट्रीम्स तो हैं ही. और बहुत सारे इंडिया में culinary इंस्टीट्यूट्स हैं, और Hmm. बट मुझे मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे पास मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, मैं कोई होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना मैं कोई टूरिज्म बैकग्राउंड से हूँ. मैंने खुद सीखा है, लाइक आई एम सेल्फ लर्न्ड and Self-made, yeah. still self-made, I'm still learning. So Right. so don't come into this profession just for the sake of कि आपके पास numbers, subscribers, followers बढ़ेंगे. Come into this profession only if you are really passionate about food. Right. I think that was a wonderful, the way you actually explained that it's passion over anything. I mean, you can be a professional, you can be an expert, you can have 10 degrees to your repute, but then if you don't know how to express that, if you're not that zealous about it, if you're not that passionate about it, I think probably that's a failure, right? So Mhm. having that passion, having that zeal, कि खाना खाना है, सिर्फ वो नहीं है, खाने को एक्सप्लोर करना है और लोगों तक पहचाना है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी से, लाइक फूड इज अ लैंग्वेज ऑफ लव, एंड फॉर Yeah. यू टू एक्सप्रेस योर लव, आई थिंक नथिंग बेटर देन फूड, नथिंग. वो मम्मी Mhm. के हाथ का खाना, मुझे लगता है आज भी वो माँ के हाथ का डब्बा, when we go Mhm. out station, we go for work, we go for jobs, we always miss that. You are into a hostel, you always miss that. So I think that's Mhm. the amazing way you've shared your journey. So moving on to the next question, sir, what are the biggest problems street food industry is facing at the moment? So not enough opportunities to trade, unsupportive local authorities, too much competition, or not enough street food mentors in the business. Is it all, or there's more to it?
See, the major challenge with street food, which I have realized in my like work with street food vendors, is the trust deficit. मतलब मैं कहता हूँ and trust deficit from the consumer side and Hmm. from the government side as well. कि Right. अगर आप सिर्फ जैसे मतलब इफ यू टॉक अबाउट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट ऑल द स्टेक होल्डर्स कि एक Correct. स्ट्रीट फूड वेंडर से हु ऑल आर कनेक्टेड लाइक द लोकल ऑथोरिटीज आर कनेक्टेड, then we are connected as a consumer, and then third from there they source their products and all जो सामान लाते Hmm. हैं वो है. तो आई थिंक देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम दीज टू स्टेक होल्डर्स कि एक तो कंज्यूमर्स को लगता है कि खाना उतना हाइजीनिक नहीं है, क्लेanलीनेस Hmm. का इशू है कि आप स्ट्रीट फूड पे खा रहे हैं तो आप कहीं न कहीं एक हेजिटेशन रहता है कि यार खा तो रहे हैं, टेस्ट तो अच्छा मिल रहा है पर पता नहीं नेक्स्ट डे व्हाट विल साफ हैपन. सुथरा हाँ, नहीं तो होगा. जी, That's what. जी, जी. एंड देन सेकेंडली फ्रॉम द लोकल ऑथोरिटीज़ कोई ऐसा हमारे अभी भी वो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आ रहे हैं और वो आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बात होती हैं. Hmm. पर Hmm. उनको कोई एलोकेशंस ऐसे स्ट्रीट फूड हब्स को लेके बहुत ही स्लो पेस पे काम हो रहा है. कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने किया भी है, एफएसएसएआई ने किया है, हमारे यहाँ इंडिया में फूड Hmm. सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी है और उन्होंने किया भी है. जैसे लाइक इफ यू गो टू अमृतसर आई थिंक दे हैव क्रिएटेड समथिंग नियर दैट गोल्डन टेम्पल एरिया की स्ट्रीट फूड Hmm. Yes. है. फिर गुजरात Yeah, में there's an अहमदाबाद में. inside only. Yeah, so you enter Amritsar, the shops are inside, the Golden Temple only. So everybody feels very safe eating there. I mean, it's actually street food only, but then the shops are all well maintained, well sanitized, and it's inside. So you have that trust issue कि टेम्पल के या अंदर ही है तो probably मॉनिटर होता होगा क्वालिटी वहां पे. सेम लाइक अहमदाबाद में उन्होंने किया है. अहमदाबाद में पूरा उन्होंने एक स्ट्रीट बनाई है, उसको स्ट्रीट फूड हब्स करके बनाया है. तो Hmm. आई थिंक इन डिफरेंट स्टेट्स द लोकल ऑथोरिटीज दे हैव टू डू इट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि उनको क्या क्या चीज़ें होती हैं. जैसे एक स्ट्रीट फूड वेंडर का प्रॉपर उनका स्ट्रीट कार्ट लगाने की जगह हो, उसको प्रॉपर Hmm. नंबरिंग की गई हो. मैं Yeah, कल परसों की बात है, कहीं ऑनलाइन देख रहा था, इन सम प्लेसेस दे हैव डन इट वेरी नाइसली. ऑन द वॉल्स दे हैव मेंशन द नंबर्स कि that's इस amazing. इस मतलब इस दीवार पे पास में 14 नंबर, तो यहाँ पे ये Hmm. कार्ड खड़ा होगा, उसके साथ में 50 नंबर. तो उनके पास अपने अपने स्पेस हैं. तो Spaces है, लोकल correct. अथॉरिटीज को भी पता है कि यहाँ पे Hmm. जो वेंडर्स हैं वो अपने कार्ड्स लगाएंगे. तो उनको बार बार ये नहीं कि आज यहाँ लगाया तो फिर पुलिस वाले ने आया डंडा मारा फिर वो दूसरी जगह जाके लगा रहा I है. think तो that is the बेटर है कि biggest practice that is happening these days. I mean, you go around Chandigarh and local towns, everywhere you will see the vendor basically on a rush. They're on their wheels. Everything is so handy. उनको लगता है जैसे ही कोई आ जाएगा मैम हमें भागना पड़ेगा. So they are also ready बिल्कुल. with the same thing कि जैसे कोई पुलिस हम्म, वाला आएगा हमें वो अपना गार्बेज बिन्स भी अपने साथ ही रखते हैं टाई करके कि उनको हम्म, निकलना पड़ सकता है कभी भी, हम्म, and for the हम्म. purpose of challans and everything that are जी, जी, happening. जी. आप देखिए ना, बीच में हल्ला होता है ऐसे कि कमिटी वाले आ रहे हैं. वो हाँ हाँ कमिटी हाँ. वाले बोलते हैं कि कमिटी में आ रहे हैं, सारे की सारी स्ट्रीट उठ जाएगी, साइड खड़े हो जाएंगे वो. फिर Hmm. कमिटी वाले जाएंगे तब दोबारा से दुकान लगा लेंगे वो. तो Very एक है true. कि उनको प्रॉपर एलोकेशंस किया जाए, उनको मेन, और उसके बाद फिर उनका वेस्ट डिस्पोजल, वाटर मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए कि हाँ अगर वो Hmm. वहाँ पे खाना बना रहे हैं तो जो वेस्ट हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कैसे इसको भेज रहे हैं, उसके बाद पानी कहाँ से साफ आ रहा है उनको. और मेरे Hmm. को लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ सिंपल छोटी सी चीज़ें हैं, ये अगर कर दी जाए लोकल अथॉरिटीज़ के तरफ से, तो ये जो हमेशा हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स और कंज्यूमर्स और सबके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, वो Very खत्म हो जाएगा. I think absolutely true. And उसके बाद I am remembering a quote from my doctor. I was very recently to a gastroenterologist for my checkup. So I think the only thing he said me was महिमा जंक कितना खाते हो? एक महीना हम्म, जंक खाना छोड़ दो, बाहर से स्ट्रीट फूड खाना छोड़ दो, तुम ठीक हो जाओगे. So I हम्म, think, like you said, that trust deficit is actually there from doctors to consumers to authorities to anybody and everybody. We have हम्म, that कि like you said, टेस्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन पता नहीं कैसे बनाते होंगे. हम्म, इवन फॉर आवर पेरेंट्स गोइंग आउट, जब मम्मा का खाना बनाने का मन नहीं है, सो यू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड, राइट? यू हम्म, प्रोक्योर इट, बट द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग, अगर उसमें से कोई एक जना बोल दे कि पर पता नहीं कैसे बनाया होगा, यू स्टार्ट बस. एट दैट मोमेंट ओनली यू स्टार्ट फीलिंग कि आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गए. बट नॉट मैं लाइक आपको दैट. बताऊं, देयर इज अदर साइड ऑफ दिस कॉइन कि मतलब आई ऑलवेज एडवोकेट दिस कि स्ट्रीट फूड इज बेटर देन रेस्टोरेंट फूड. ओके. इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल, मतलब जो लोग मेरे वॉक्स पे आते हैं टूर्स पे, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स,
उनसे हम लोग ने हजारों लोगों को होस्ट किया है ओल्ड दिल्ली की वॉक्स पे, Right. और हमारा 100% स्ट्रीट फूड टूर होता है, मतलब वी ईट ऑन द स्ट्रीट्स, लिटरली वी गो टू 8-9 प्लेसेस एंड फॉरेनर्स दे ईट ऑन द स्ट्रीट्स एंड वी हैव नेवर हर्ड एनीवन सेइंग कि हमें मेल आ रहा हो या फिर कि वी हैव फॉलन सिक और हमारा तबीयत खराब होगी, नहीं। क्योंकि व्हाई, द फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल टेल यू व्हाई आई से स्ट्रीट फूड इज सेफ। फर्स्ट इज दैट कि स्ट्रीट फूड हमेशा आपके आंखों के सामने बनता है, वो लाइक kitchen, दे those big, ओपन किचन है। correct. 5-star hotels and restaurants, the kitchens would be hidden in a place where you will not even have a peek of what is happening inside. Very Yes. true. एंड सेकेंडली लाइक जो भी उनका रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है, दे प्रोक्योर इट एवरी डे, इट्स लाइक फ्रेश। ऐसा नहीं होगा कि मैंने, अब बता रहा हूँ, मैं अभी देहरादून में रह रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक जगह अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही फेमस बटर चिकन ब्रांड यहाँ पे आया, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा चलो मैं भी लेके आता हूँ। उनके किचन में गया वहाँ देखने के लिए, उन्होंने 10 मिनट में मुझे गर्म करके दे दिया। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस दैट, लेकिन वो एक बार में अपनी करीज बना के फ्रीज में Right. कर Yeah, लेते हैं very और आपको 15 दिन महीने भर तक वो गर्म करके देते रहेंगे। लेकिन correct. स्ट्रीट फूड पे जाएंगे आप, सामने फटाफट सब कुछ वो फ्रेश असेंबल करके देगा और खत्म हो जाएगा, खत्म, वो कहेगा सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं दुकान लगाता नहीं हूँ, मैं शाम में ही आऊंगा, दिन में मैं अपनी तैयारी I've करूंगा heard, शाम में आने yeah, की। heard तो of these things. ये भी सेकेंडली ये भी है कि फ्रेश फूड मिलेगा। और थर्ड, वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो कई सालों से, मतलब 50 साल 60 साल से फैमिली उनकी यही काम करती आएगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे, बंद होंगे, बट स्ट्रीट फूड वेंडर कहीं ना कहीं आपको They'll दिखेगा कि वो stay. पुराने आ रहे हैं जी। हाँ, very तो true. बस उनको सिर्फ दो चीजों की ध्यान मतलब करना होता है जो स्ट्रीट फूड में खाते हुए। एक है क्लेanलीनेस का, कि आसपास सफाई हो उनके, और उसमें सबसे बड़ा मेन चीज होती है, एक मुझे लगता है, जो एक तो वाटर, सेकेंडली Yeah. वेस्ट डिस्पोजल, की वो खाना खा के वेस्ट जहाँ पे कर रहे हैं तो वो मक्खियाँ नहीं आ रही हो वहाँ पे, वो मक्खी आपके खाने में नहीं आ रही हो, और साथ में Very जो true. पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी साफ हो। अदरवाइज लाइक एवरीथिंग इज गुड टू ईट। आप आलू टिक्की खा रहे हैं सड़क पे खड़े होके, सामने वो तल के दे रहा है तो आप देख रहे हैं ऑयल कैसा है, आपको अगर लगे कि नहीं ऑयल बिल्कुल काला हो चुका है तो डोंट ईट इट फ्रॉम देयर, गो टू Very अदर प्लेस। सो another place. I think that was a very nice justification for someone who's been a master himself into street food. That is the reason we've got a perspective so clear and so vivid. Because I myself, I mean, I think last 2 weeks back, I was at a 5-star hotel. There was a conference I was attending. So I mean, the conference was prolonging, and we had high tea there. So the high tea was to happen at 5:30. So I and my friend, we thought, चलो थोड़ा सा snack कुछ लेकर आते हैं, a little lighter one, because we were feeling hungry. We didn't have lunch before we started. So we ordered, I remember, 2 cups of coffee and a pasta there, right? So वो पास्ता आया, पहले तो आने में देर लगी, फिर कटलरी नहीं आई, कटलरी आई वो क्लीन नहीं थी। A 5-star hotel, big hotel in Chandigarh, I would not like to name that. उसके बाद the pasta that we actually ate, it was not probably cooked. So my friend herself is a great chef, she's an expert. So she said ये cooked इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने स्टोर किया हुआ था फ्रिज में, उन्होंने अभी जस्ट सॉस में डाल के हमें दे दिया। And I literally wanted to speak to the authorities, tell them कि इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा restaurant, and some that hotel is running from ages. I mean, बड़ी बड़ी conferences होती हैं वहाँ पे, and then such kind of pasta. I was shocked कि ऐसा quality. On the other hand, I would rather go to a local vendor, probably 1/3 of the price I'd pay, and इतना fresh, like you said, क्योंकि वो इतना चलता है उनका कि वो ऐसे बिकता है। I also recall a कड़ी चावल kind of a stall that ओहो, ये फ्रीज कर गया। पापा ये थोड़ा मेरी तरफ से। ओ बेटा बाप को पैसे दे रहा है। अरे नहीं पापा, इट्स जस्ट अ थैंक्स। किस बात का? वो आपने कहा था ना, कहाँ पढ़ना है वो फैसला बड़ा होता है। जिंदगी के 4 साल का सवाल नहीं, सवाल पूरी जिंदगी का है। Maharishi Markandeeshwar deems to be University, Maulana Ambala, preparing you for the real world.
Yeah, so can I be heard now? Yeah. So Perfect, perfect. sorry, I think it's the Yeah, network you were talking that's. about kadi chawal. You were talking about kadi chawal. So I was telling you this curry chawal. I mean, my mom was not at my place, and I'm not really a good cook, and I probably do not like cooking. I love eating. I don't like cooking. So I went to this curry chawal stall, very famous in my town. So I generally asked him. I think I reached around 1:30. So I said if he has something, he said बस finish होने वाला है, last आपके लिए एक plate मिल जाएगा. So I said why so, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं. So he said I come up in at 10 in the morning. एंड 2 बजे तक मेरा वाइंड अप हो जाता है, उसके बाद मैं चला जाता हूँ, आई प्रिपेयर, आई प्रोक्योर एंड आई डू एवरीथिंग, एंड मैं नेक्स्ट डे आता हूँ. सो लाइक यू सेड, वो उनका इतना ज्यादा सेल होता है दैट दे डोंट हैव एनी लेफ्ट ओवर्स. ऑन द अदर हैंड, द रेस्टोरेंट एज बिग वुड हैव लेफ्ट ओवर्स इन क्वांटिटीज, and then they'll keep storing and refrigerating, and then probably 10 minutes में कैसे डिश आ सकता है, otherwise a butter हाँ, chicken बस बस. cannot be made हाँ, in 10 minutes, right? बिल्कुल नहीं, So सवाल ही नहीं होता. absolutely, absolutely. So moving on to the next question. Restaurant surveys are one of the best ways to gather customer feedback and improve one's menu and service and overall guest experience. So have you been somewhere where you had to give negative feedback despite you blogging their place? It has happened many times with me, but see what happens that थोड़ा सा इसमें बोलने का तरीका मेरा बदल जाता है. I don't know whether you have watched my videos. If you ask any regular viewers who has Mhm. watched my videos, what I do कि मेरा एक स्टाइल है बोलने का. जैसे मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा, अब मेरे साथ ओनर बैठे हुए हैं. अब ओनर के सामने आप बोल सकते नहीं है कि आपका खाना बिल्कुल बेकार है. दो तरीके होते हैं इनफैक्ट. ऐसे एक तो होता है कि फिर फ्रीज कर गया शायद. ओहो. Hello. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. Yes, sir. या तो दो दो तरीके होते हैं. एक तो है कि अगर मैं खुद से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आई तो बहुत बार मैं उसको डालता नहीं हूँ अपने कंटेंट में. लाइक व्हाई टू रिकमेंड अ प्लेस वेयर फूड इज नॉट Correct. गुड. जैसे Correct. एग्जांपल Correct. दूं, मैं अभी जयपुर में, जब मेरी जयपुर की सीरीज आई थी, आई वाज एट अ प्लेस वेयर आई हैड मलाई पनीर समोसा. मुझे उसे शूट किया हमने, एडिट में कट कर दिया, नहीं डाला, क्योंकि वो पसंद Hmm. नहीं आया था. मैंने कहा लोगों को क्यों रेकमेंड करना. Correct. सेकेंडली, इफ यू आर फिल्मिंग एट अ प्लेस वेयर यू डिडंट लाइक एनी डिश, सो व्हाट आई से ऑन द कैमरा कि इसे आप उम्दा तो नहीं कहेंगे, इसे आप अनोखा कह सकते हैं. मतलब दिस इज माय वे ऑफ सेइंग द फूड वाज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट. Not really good. It was नॉट वेल. different. डिफरेंट. Correct. सो आई सेड लाइक इट्स डिफरेंट फॉर मी. तो आप अगर मैं मेरे जो व्यूअर्स उनको पता है कि मैं अगर उम्दा बोल रहा हूँ, तो मतलब खाना अच्छा है, आप जाके वहाँ खाएं, फूड इज गुड. व्हेन आई से इट्स अनोखा, मतलब इट्स डिफरेंट फॉर मी, आई डिडंट लाइक इट. सो जो व्यूअर्स हैं वो समझ जाते हैं कि अनुभव को पसंद नहीं आया. हाँ, सो probably वी कैन. आपको पसंद आए नहीं आए, you're not too sure about that. जी जी जी. तो मैं उसको कर देता हूँ अनोखा. और साथ में ये भी है ना, फूड बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. जैसे मुझे मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, और Hmm. मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि लाइक आप फूड रिव्यू करने जा रहे हो, आपको तीखा पसंद नहीं है, तो आप कैसे बताओगे. बट इट्स माय Hmm. पर्सनल थिंग, आई कांट हैंडल स्पाइसेस, लाइक आई कांट हैंडल Correct. टू मच Correct. हीट इन द Hmm. फूड. तो वो सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें बहुत तीखी होगी, मुझे शायद पसंद नहीं आ रही हो, आपको तीखा पसंद है, आपको पसंद आए, तो वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव भी चीज़ रहती है. तो मेरा ये आइडिया रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड एक्सप्लोर करूँ, और रिव्यू अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, मेरा मुझे Very. क्या लगता है, व्हाट आई डिड लाइक, Mhm. वो करता हूँ. I think that's a very honest one, and that's what talks about your work. And like you said, you have all organic viewers on your YouTube channel. I think हम्म, that is the reality, because you're very honest about how you feel about it. Like you said, अगर आपको spicy नहीं suit करता तो नहीं suit करता. You can't हम्म, force your body to have something just for बिल्कुल. adding reviews to it and then probably spoil your health, because you also have to survive, right? So I think यस that's very honest an answer that you've given. So moving on to the next question. Before we move to the next question, there is a comment in the LinkedIn sec from LinkedIn. A person named Ashutosh Jha. He's writing that he loves malai chap and honey chili potatoes, and he's asking about your favorite dish. Which one is yours? माय फेवरेट डिश, देयर आर सो मेनी लाइक. अब जैसे उनके रेंज में ऐसा लग रहा है मुझे, उनको मलाई चाप, हनी चिली पोटैटोज, तो उनको थोड़ा इंडो चाइनीज फूड पसंद है, जिसको हम लोग चिंजाबी भी बोलते हैं, कि चाइनीज प्लस पंजाबी. वैसे डिशेस पसंद. तो इस रेंज में मुझे भी, अगर इसमें एक और इंक्लूड कर दो आप, मोमो के वर्जन, जैसे तंदूरी मोमोज वगैरह काफी अच्छे लगते हैं इस सेक्टर में, जिस जो Right. आपके टेस्ट हैं आशुतोष.
Yeah, I think Ashutosh, you've got your answer, and we're sorry for the network glitch. Sometimes technology is something that we get to connect with people from such stature and such areas of the world, but at the Mhm. same time, network is not network technology is something that we don't have a control upon. So we're sorry for the Yeah. network glitch. Moving on to the next question, sir. Do you eat everything that you post on the social media, or is it just a spoon or two? And what do you do with the leftovers? See, when I'm vlogging at any place, I try to share food with people. Okay. Sometimes it has happened that कि एग्जांपल में जैसे मैंने एक डिश ली, इट कुड बी Hmm. से वन गुलाब जामुन, आई विल गिव एन एग्जांपल, वन गुलाब जामुन. Mhm. तो हम लोग मेरे साथ एक होस्ट रहते हैं, जैसे लाइक से इफ आई एम फिल्मिंग इन अंबाला, सो यू आर देयर हेल्पिंग मी एक्सप्लोर द सिटी. तो मैंने एक Right. गुलाब जामुन लिया, उसमें से एक स्पून मैंने लिया, एक स्पून आपने लिया, एक साथ में कैमरामैन होता है उसको दे दिया, तो लाइक वी शेयर द फूड. Share. सो Yeah. यूजुअली वी ट्राई टू अवॉइड ऑर्डरिंग लाइक सबके लिए अलग अलग पोर्शन मंगवाना. Mhm. तो इसके लिए भी बहुत क्रिटिसिज्म मुझे हमेशा आती है कि आप कंजूस हो, आप एक ही चीज मंगवाते हो और आप साथ में तीन लोग खा लेते हो. बट आई से कि नहीं, एट द एंड इट्स लाइक ऑल्सो लेफ्ट ओवर. Yeah. क्या करेंगे लेके, हमें 10 Correct. जगहों पे खाना है. हाउ कैन आई Hmm. ऑर्डर लाइक से 10 चीजें. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि Exactly. ऐसे मुझे, मैं किसी थाली रेस्टोरेंट में गया, तो मैंने एक थाली मंगवाई, छोटे प्लेट्स मंगवा लिए, उस थाली में से हम तीन लोगों ने थोड़ा सा निकाल के टेस्ट कर लिया. लाइक इट्स Mm-hmm. ऑल्सो अबाउट टेस्टिंग एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक कि फूड वेस्टेज ना हो. और Very बहुत true. जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं, अगर बच भी गया तो वी गेट इट पैक्ड एंड गिव इट टू समवन. मतलब Right. या फिर बाद में खा लिया, या फिर ऐसे केक्स वगैरह Mm-hmm. हुई, कुछ भी हुआ जो पेरिशेबल Mm-hmm. नहीं है, तो वो हम लोग ले आते हैं. और तो वो मतलब मोस्टली ये होता है कि फूड शेयर कर लेते हैं. Put it to use. Yeah, बिल्कुल food waste करना भी क्यों? I think that's the deal, and I think that's an amazing way. क्योंकि I think when you are tasting something, you have to have the taste on the palate, and then you need your palate very fresh for you to हम्म. have the taste of another thing. अगर आपने वो सारा खा लिया, तो next चीज के लिए you won't have the palate very fresh and ready to probably explore all the taste buds being जी. very active onto the next review that you have to. So I think that's a greater way of हम्म. being economical in terms of the cost, and at the same time the taste getting very fresh into everyone's या mouth. इकोनॉमिकल एंड देन एथिकल एज वेल, कि आप Very true. खाना Hmm. वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उतना ही लें जितने आपको जरूरत हो. अब बिल्कुल मैं बिल्कुल. पूरी बड़ी सी, इसलिए मैंने आज तक अपने चैनल पे बहुत बार कोशिश करता हूँ, लोग इनवाइट करते भी हैं, बुलाते भी हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ पे बाहुबली थाली है, हमारे यहाँ पे 32 इंच की थाली है. आई अवॉइड गोइंग टू दोज प्लेसेस. मैं बोलता हूँ यार, मैं अकेले आके इतना खा नहीं पाऊंगा. खाऊंगा कैसे? I don't वेरी have ट्रू. that much appetite. We would need like four, five, six people to just finish that food. राइट. ऐसे हमने अभी बीच में एक किया था रमजान के टाइम पे. we hosted one event, and Kareem's, it was called Tandoori Bakra. So like the ओके. we had the whole roasted goat. So we invited 10 people. We wanted to, ओके. even I wanted to taste it. तो मैंने कहा या. 10 लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बाद जाके फिर हम लोगों ने वो टेस्ट किया. उसके बाद भी बच गया था, फिर लोग अपने घर भी ले गए. तो Okay. ऐसा था. I think that's, like you said, ethical and economical at the same time. Yeah, Right, yeah. very true. So, moving on to the next question, can you share few strategies to create content as a food blogger? So, basically, insights on how to get clients for your blog in large numbers, and what are the necessary gadgets that one needs to have while blogging? Okay, so you have two questions. First is about the gadgets, and second is about like how to Get more generate number more. of clients on your blogs and Yeah, how to yeah. generate leads. Yeah. So first is that you have to like figure out your areas of interest. Ki food blogging is quite a diverse, you can say, area. Hmm. You can specialize in any of them. As I said, like we're talking about street food, there would be food bloggers who would be just blogging about cafes. There would be bloggers who would be writing or blogging about restaurants. और बहुत सारे होंगे जिनको टी में इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे होंगे जिनको वाइन में इंटरेस्ट होगा. So there are different areas in food blogging as well. There would be people who are combining food and travel. So you have to first figure out what exactly you want to do. Do you want to just do street food? Then focus on street food. Once you are done with that, second is like keep doing it. एंड डोंट वरी अबाउट कि फर्स्ट डे में ही आपके पास व्यूअर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास नंबर्स आ जाएंगे. इट टेक्स टाइम, लाइक फॉर एनीथिंग, लाइक इवन इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस और इफ यू स्टार्ट योर स्टडीज, ग्रेजुएशन करने में भी 3 साल लग जाते हैं, मास्टर्स करने में 2 साल लग जाते हैं. सो इट्स नॉट कि एक दिन में आपने ब्लॉग बनाया, कल सुबह उठे और वीडियो आपकी वायरल हो गई और आप के पास रेवेन्यू आ गया, एंड देन यू गो ऑन. सो इट टेक्स टाइम टू कीप डूइंग इट. एंड कभी 6 महीने, साल भर भी लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, but keep doing it. And about the gadgets, I would say कि start with small.
stuff. मतलब ऐसा नहीं है कि डे वन में ही आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और बड़े सारे गैजेट्स ले आए. Start with basic stuff. These days, everyone has good smartphones. Right. You can start. Anyone can start their blog with a smartphone. उसमें अच्छा स्पीकर माइक भी होता है और साथ में कैमरास भी हैं, वीडियोस भी हैं. उसको बना के यूज़ करना शुरू करें. धीरे धीरे अपग्रेड करें. अ, हम लोग जो शूट करते हैं हमारे पास तो लाइक वी गो विद अ फुल सेटअप कि माइक होना चाहिए, कैमरा, डीएसएलआर जो हम लोग उससे शूट करते हैं. बट इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी वर आल्सो यूजिंग लाइक हल्के Smart. वाला. हाँ, उससे Correct. शूट करते थे और उसके बाद धीरे-धीरे अपग्रेड करना शुरू किया. जब व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू योर ब्लॉग्स, देन यू अपग्रेड योर गैजेट्स. सो स्टार्ट विथ स्मॉल एंड देन अपग्रेड इट कि मार्केट में क्या है, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या अच्छा आ रहा है. बेस्ड ऑन योर बजट एज़ वेल. ऐसा नहीं हो कि सारा बजट गैजेट्स में लगा दिया आपके पास फूड, क्योंकि इस फूड में भी एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं. तो कीपिंग दैट इन माइंड. Right. I think that was a very fair deal that you've given. Start from less and then keep exploring and keep expanding, as in how you gain हुँ, more हुँ. and more, as in how you grow more and more, and that's how you invest. I think that's the rule of businesses as well. I mean, we या. always start with a very small capital, and वो छोटे हुँ. से फिर हम expand करते जाते हैं. जितना जितना आपका revenue आता जाता है, उतना उतना आप और उसको expand करते जाते हैं. So that's the rule of the business as well. So moving on to the next question, sir, do you, because it's a very follow-up question to what we just discussed. So do you think your posts decide the audience and which further decides what kind of brands would associate with you later? Honestly, I haven't done many brand collaborations yet. पता नहीं मुझे Okay. क्यों नहीं मिलते ब्रांड एसोसिएशन. कोशिश तो करता हूँ पर Hmm. मिलते नहीं है. सो बट ये है कि क्योंकि मेरा शायद लगता है मुझे जो मेरे जो ऑडियंस हैं वो भी बहुत ही सेलेक्टिव है. मतलब इट्स नॉट Hmm. लाइक कि मास सभी लोग देख रहे हैं. Hmm. उनको बिल्कुल इंटरेस्ट है फूड में और कल्चर में, वो Right. ऑडियंस देखती है. तो हमारा हमने ब्रांड ऐसे कोलैबोरेशंस थोड़े बहुत किए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया है. Hmm. बट बहुत कम किया है. और ऑनेस्टली मतलब मैं उतना एग्रेसिवली अप्रोच भी नहीं करता हूँ किसी ब्रांड्स Okay. को कि जो Hmm. जिसने हमें अप्रोच किया और हमारे साथ मुझे लगा Hmm. कि नहीं मेरे ब्लॉग्स के साथ मैच करेगा तो उनके साथ कर लेते हैं. अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने अप्रोच किया, हमें मजा नहीं आया, हमने पहले ही मना कर दिया. Mm-hmm. I think yeah, that is again true because you also as a brand, I mean, if it's your channel, you also as a brand have to maintain that credibility because Yes. your audience is connected and it is investing in you as a person. So you Mm-hmm. can't do something off track with which doesn't really align with your objectives. So definitely, True, yeah, I true. mean, dropping off is again a great idea there. So moving on to the next question, youngsters nowadays are either golgappas or momos addict. We all know, and I can see the difference myself. So I would have started my blogging from this, and I would have gotten confused towards the end as to what to do next. ये कर लिया बस खत्म हो गया अब क्या करना है? So how do you select what to blog next? What restaurant? What dish? I अच्छा, mean, ये आपने how do बहुत you सही sort of आपने organize? ये आपने बहुत सही कहा है. मतलब मैं जब किसी नए इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत लोग टैग करते हैं फूड ब्लॉगर्स और उसमें न्यू भी जो नए होते हैं वो भी टैग करते हैं, तो मैं देखता Hmm, हूँ एक सिमिलरिटीज दिखती हैं उनके सबके ब्लॉग में. आप hmm, देखोगे या तो वो मोमो की डाल रहे होंगे या नूडल्स की डाल रहे होंगे या फिर मैगी की डाल रहे होंगे, hmm. क्योंकि आई एम इफ बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग हाँ, स्टूडेंट्स. उनको इतना तो यहाँ तक explorations कर लिया उसके आगे क्या? I mean, उसके आगे we क्या है? got a lot वो of यही ideas. पोस्ट करते हैं. या सो एज़ आई सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि वो अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करना और उसके बाद फिर बजट भी मैटर करता है कि आपके Hmm, पास है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कि आप कितने एक्सपेंसिव डिशेज़ में जाके खा सकते हैं या फिर आप स्ट्रीट पे करेंगे या फिर आप अपने hmm. शहर में कर रहे हैं, आप दूसरे शहर में भी खाने के लिए जा रहे हैं. तो Right. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक कंटेंट बनाने में. तो मुझे लगता है कि पहले तो अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करना ज़रूरी है कि किस सेक्टर में इंटरेस्ट है और फिर उस तरफ जाएँ. और फिर आपकी वो एक आइडेंटिटी बन जाती है. लेट्स से अगर आपने चाय के ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट टी एक्सप्लोरेशन कि वेयर यू Right. हैव बीन टू. सो देन यू हैव लाइक सेलेक्टेड ऑडियंस हू आर लुकिंग इनटू योर कंटेंट. Absolutely. I think that was a great answer. So, explore your interest first is a great message and a loud message that you're giving to the audience. Once you're very sure of that, then look for the resources that you have and how well can you probably, divide them and invest them. And that's how you get about it. Yeah. So, moving on to the last question, sir, since you have the experience of almost every kind of street food, so what would you like to eat for your last meal and from where? See, that won't be street food. If I have to eat my last meal, that would be बिल्कुल
मम्मी के हाथ का राजमा चावल बना हुआ, आई I could थिंक say this. तो वो मेरा लास्ट मील होगा। और दैट्स माय फेवरेट डिश, इन फैक्ट आई लव ईटिंग प्रॉपर पंजाबी गाई, तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो Right. बाकी स्ट्रीट फूड में तो आई ईट एवरीथिंग, सो ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है कि लास्ट मील ये होना चाहिए, लेकिन घर का खाना इज घर का खाना। I think I would not want to counter this. I would like to really second on this, and I would 101% vouch for this. That probably everyone out there would agree to this. कि वो घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना would be the last meal if there would be one, and I think everyone would love to have that. I think on a great note, sir, one last message to the food bloggers who'd want to come join the community or probably want to take your advices or anything. So one loud message for them. What would that be, sir? Um, just do it if you are really passionate about food. I think Right. that's the only message I want to give. कि ऐसा नहीं हो, don't do it for the sake of glamour or numbers. Yeah. Do it only if you are passionate about food. Absolutely. I think that was a very true, real message, and that falls for almost everything that we explore in life. I mean, jo bhi karna, if you're zealous about it, if you're passionate about it, nobody can stop you. All you need is that zeal, that enthusiasm, and then you keep getting kicks. You might fall down, but then you have to rise on your own and then keep exploring. I think I must admit, sir, that your life journey and your successful achievements and career speaks volumes about your work. We've all had plenty of takeaways and actionables to take home, and a lot of lovely food discussions that we've had. I think I'm going to run to my mother after this, rush straight into her kitchen and ask ki mama kuch de do khane ke liye, because we've talked about food that much. And wishing you huge success, love, and luck your way, sir. Thank you so much for joining in today. It was an absolute pleasure. Thank Thank you, you so thank you, much. thank you for having me. Thank you. Thank you, sir. Have a great day. Thank you so much, everybody. Stay tuned for further sessions. Thank you.